Om Shanti. Very good morning to one and all. Today we will go through English Mulli, that is 10th February 2021. Baba is telling, sweet children, you have come to this university in order to die from this world and go to the new world. Your love is now for the one God. तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। बाबा बोल रहे, यू हैव कम टू दिस यूनिवर्सिटी इन ऑर्डर टू डाई फ्रॉम दिस ओल्ड वर्ल्ड। तुम इस पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया को जाने के लिए, एंड गो टू द न्यू वर्ल्ड। टुडे क्वेश्चन, with which method of remembering the Father do you become wealthy? With which method of remembering the Father do you become wealthy? इस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है। Answer, the Father is a point. Become a point and remember the point and you will become wealthy. Oh, the Father is a point of light, and you shall become a point and remember the point and you will become wealthy. When you write a point, that means 0, besides 1, it becomes 10. And then when you write another 0 besides it, it becomes 100. And then 1000 and more than that. By your having remembrance of the Father, a 0 continue to be added and you continue to become wealthier. Only by having this remembrance do you earn a true income. Only by having this remembrance do you earn a true income. आप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, ऐसे हो जाता है। तो ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है, तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। टुडे सॉन्ग, महफिल में जल उठी समा। द फ्लेम हैज इग्नाइटेड इन द गैदरिंग फॉर द मोथ। द फ्लेम हैज इग्नाइटेड इन द गैदरिंग फॉर द मोथ। मोथ मीन्स समा, दैट द पतंग जल उठी समा। So the flame has ignited in the gathering for the moth. Today Baba has explained us how to become wealthier. Really it is real the mathematics, how to become wealthy. करोड़पति को तो करोड़पति बनना है, how? Now try to become in the feeling of soul consciousness. Then you can remember your Supreme Soul as a point of light. Then every time when you are thinking that I am a soul, I am a point of light, I am just 0 point, then your additional point is going to be added. It's very nice. Essence for Dhana, number 1 point. Always maintain the awareness that you are goldly student. Do not create any dirty habits, but finish them. There should not be the slightest thought of vices. हम गर्ली स्टूडेंट है, यह सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। बेकार का जरा भी ख्यालात नहीं आना चाहिए। नंबर 2, फॉरगेट द कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी व्हाइल अलाइव एंड रिमेंबर द फादर। चर्न द डिफरेंट पॉइंट ऑफ नॉलेज एंड डू द बिजनेस ऑफ प्यूरिफाइंग द इम्प्योर। फॉरगेट द कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी while alive and remember the Father. Churn the different point of knowledge and do the business of purifying the impure. जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। Then today blessing, may you be one who has elevated fortune and with the intoxication of your birthright, let your qualification be equal to your aim. May you be one who has elevated fortune
and with the intoxication of your birthright, let your qualification be equal to your aim. Explanation. In your physical life, your physical wealth is your birthright. बर्थराइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्ष्यों को सामने बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। तकदीरवान भव में बी वन हु हैज एलिवेटेड फॉर्च्यून। श्रेष्ठ तकदीरवान, योर फॉर्च्यून मीन्स तकदीर, एलिवेटेड श्रेष्ठ, इंटॉक्सिकेशन नशा। In your physical life, your physical wealth is your birthright. Similarly, in Brahmin birth, the wealth of virtue, spiritual happiness, and power are your birthright. Let there be the intoxication of your birthright in a natural way, and there will be no need to make any effort. By having this intoxication, your qualification will become according to your aim. While knowing and accepting yourself as you are, however you are, and also knowing the elevated father and family, you become one who has elevated fortune. In your physical life, your physical wealth is your birthright. In the same way, by having this intoxication, your qualification will become according to your aim. While knowing and accepting yourself as you are, however you are, and also knowing the elevated father and family, you become one who has elevated fortune. Slogan. Perform every action while stabilized in your original stage, and you will easily become a star of success. हर कर्म सो स्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। Perform every action while stabilized in your ओरिजिनल स्टेज, सो स्थिति में स्थित होकर करो, एंड यू विल इजीली बिकम ए स्टार ऑफ सक्सेस, तो आप सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।